Reena is a domestic worker. She lives in this one-room house, which she also shares with her in-laws. किसी का घर में झाड़ू करती हूँ, किसी का घर में झाड़ू पोछा, किसी का घर में बर्तन करती हूँ, किसी के घर में खाना बनाती हूँ, किसी के घर में कपड़ा धोती हूँ. In India's urban centers, domestic work is the fastest growing occupation for women. It is largely an unorganized sector. An estimated 3 to 10 million people are employed as domestic workers. कोठी में जब काम करने जाती हूँ तो एक तो उन्होंने भेदभाव बहुत रखती है. तो अगर मुझे चाय भी देती है, उन्होंने अपने जो चाय पीती है उसमें से चाय उस बर्तन में चाय नहीं देते हैं, अलग से रखते हैं. छुट्टी उट्टी करती हूँ तो फिर उसका पैसा भी काटते हैं. Despite the fact that domestic workers make up for a significant proportion of the Indian workforce, they often remain invisible. Moreover, their working conditions don't come under any explicit legal regulation. This lack of legislative protection makes them vulnerable to exploitation. और फिर तनख्वाह भी बढ़ाने के लिए बोलती हूँ तो काम छोड़ देने के लिए बोलता है, तो फिर उनकी कहना मानना पड़ता है, सुनना पड़ता है. मजबूरी हमारा है, उनका तो है नहीं. हम छूट जाएंगे तो कोई और मिल जाएगा. Reena is not the only one who feels exploited. While domestic work is a paid economic activity, it still remains grossly undervalued because it has traditionally been provided for free by women of the households. मैं झाड़ू पोछा वो कपड़े बाथरूम बर्तन सारा में करती हूँ. जो पर करते जो 2 रूम करते वो डायरी में उसका पैसा मैं 2000 रुपया दूँ. मैंने इतना बोला सो 2000 से मेरा क्या होने वाला है. आप काम कभी कल ज़्यादा बढ़ते, कभी छत सफाई करवाते, कभी कोई काम करवाते. मेरा 2000 से नहीं कुछ होने वाला. Several organizations have begun to work with domestic workers and equip them with specialized skills such as elderly care, child care, and housekeeping. These trainings help the domestic workers seek new employment opportunities. The Domestic Workers Sector Skill Council, which was supported by the International Labour Organization, helps domestic workers develop skills and seek new jobs. While skills are one step in formalizing the sector and assuring decent work, the trade unions also play a significant role in helping domestic workers to voice their issues. घरेलू कामगार के लिए कोई कानून नहीं और हम इसी के लिए मांग करें क्योंकि जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक ये मालिक नहीं डरेंगे, वो अपनी मनमानी करेंगे. Trade unions and domestic workers' organizations help them achieve better working conditions through collective bargaining and negotiation. A milestone has been achieved, and today the worker status for domestic workers is recognized through 2 national legislations. The unions also sensitize the employers about the rights of the domestic workers, and in cases of violation of the domestic workers' basic rights, the trade unions help them seek justice through formal and informal mechanisms. A domestic workers' trade union has also reached Reena's neighborhood. Manjeet, the community leader, spoke to her about the union's role and her right to decent work. Reena decided to join. यूनियन के साथ जुड़कर उन्हें क्या मिला, तो सबसे पहले आज वो आवाज़ उठाने की ताकत उनमें आई है. जो ये कर रही थी कि नहीं, अगर उसने छुट्टी से करने पर निकाल दिया तो आज वो रिसिस्ट कर कर इतना तो ज़रूर कह पाती हैं कि आप हमें निकाल नहीं सकते, हमें 4 छुट्टी मिलती है. हमारी 1 हफ्ते में 1 रेस्ट, जैसे आपको 2 रेस्ट मिलते हैं वैसे हमें 1 रेस्ट मिलना हमारा अधिकार है. आप हम पे एहसान नहीं कर रहे. ये ताकत मैंने उनमें पैदा करी है. यूनियन में आप खुद अपनी कम्युनिटी की समस्याओं को आपस में मिल के सुलझा सकते हैं, और जब तक आप में एक दूसरे से जुड़ाव नहीं होगा, एक अकेला उठ के बोलेगी भी तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर पूरी कम्युनिटी की महिलाएं इकट्ठी हो जाएंगी, इकट्ठे होकर भी जोड़ेंगी तो फ़र्क पड़ेगा. The Director General of the International Labour Organization visited the Domestic Workers Trade Union HMS that Reena and Manjeet belong to. He also visited Reena at her home. Reena and many other women spoke about their difficulties and their hope for a better future. 10 रुपए का काम नहीं है तो 20 रुपए का, हमें 20 रुपए ही मिलने चाहिए.
तो हम 20 रुपए का ही काम करेंगे, तो 10 रुपए का क्यों काम करेंगे? क्योंकि हम अपने बच्चों को सबको छोड़ के आते हैं, हम भी तो उनके बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो हम भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ही तो कर रहे हैं ना। हम यूनियन में जुड़ने से हमें ये पता, सबसे पहले ये पता चला कि हमें अपना हक कैसे मांगना चाहिए, और धीरे धीरे आगे ऐसे हमारे सर अगर हमारे हौसला बढ़ाएंगे, हम उनके साथ चलते रहेंगे। The union has prepared an action plan. Manjeet shared with the ILO all the steps the union has been taking to spread awareness and create collective bargaining power to achieve decent working conditions and dignified life for the domestic workers. What I've learnt here is that there is a very important process taking place. Women who have organised with the help of the HMS, with the support of the ILO, with a very clear idea, a very clear action plan, how they intend to organise, how they intend to improve their conditions and where they're going in the future. And their claim is a very common claim, one we find around the world. It's a claim for decent work, it's a claim for respect, it's a claim for dignity. And I think for the ILO, the struggle of women, courageous women like this, who are simply calling for the basic human right of decent work, is one that should inspire us, but it's also one that we need to support all over the world, and not least here in Delhi with these fantastic women who are claiming their rights. Bravo, well done.